for the inconvenience caused because I'm a little late. Okay, so there was some technical glitch because of that. I could not start it on time. But now we are very much live. Hope you can see me live. Yeah. So I'm live both on YouTube as well as on Facebook. Okay, so let me check it now. Great. Yeah. So now I hope everybody can see me both on Facebook as well as on YouTube. So the topic that we are going to discuss is very important, and you might have heard about GPS. All of you. Why should I say you might have heard? You all of you have heard about GPS. But today we are going to talk about a similar topic, a similar subject that relates our mind, जिसका बिल्कुल सीधा संबंध हमारे दिमाग से है. ओके, और हम अपने दिमाग को कैसे उस कॉन्सेप्ट के साथ मिलाकर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो माय नेम इज विनीत कपूर और अब हम दोनों जगह पर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब दोनों जगह पर लाइव हैं इस समय, और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग हियर, फॉर कमिंग हियर. वेरी गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग शोम्पा, गुड इवनिंग एवरीवन. ओके शाजी, गुड इवनिंग टू यू एज वेल. और आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे, यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीपीएस. जीपीएस सुना है आपने? सो टेल मी, व्हाट इज जीपीएस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? गुड इवनिंग विकास जी, गुड इवनिंग. ओके, what is let me share it with some of the people here, okay, because they had asked me to share it. Okay, what is the full form of GPS? Who will tell me? What is the full form of GPS? जरा जल्दी से बताइए कि GPS की फुल फॉर्म क्या होती है. और आज हम पूरा के पूरा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे जीपीएस से. ओके, और जीपीएस से हम अपने माइंड को कैसे रन कर सकते हैं. हेलो अमित, हेलो विकास जी, एंड हेलो एवरीवन. ओके, I'll show you that. Great. Let me share it to one or two. Yeah, I've already done that. Yeah. Okay, so I'll share my presentation with you all. मैं आपके साथ अपनी presentation share करता हूँ. Okay. Yes. Can you see this presentation here? Convert your mind into a GPS system. तो आप अपने माइंड को कैसे जीपीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए, अब इस समय जो हम सिखाते हैं वो हम आपको इंग्लिश नहीं सिखाते हैं, हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें ये सिखाते हैं. सो इट विल बी बेटर दैट इफ यू बी विद अस फॉर सम टाइम एंड लर्न दिस. ओके, हाउ टू कन्वर्ट योर माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो, हाउ टू कन्वर्ट योर माइंड इनटू अ जीपीएस सिस्टम. ओके, इसकी आज हम बात करेंगे. सो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एब्सोल्युटली राइट. जिज्ञासा ने कहा है कि जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ओके, आप सभी से. द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज, हाउ डू यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दीज डेज? आप जब ओला में बैठते हैं, उबर में बैठते हैं, और या आप इंडिविजुअल भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रेवल करते हैं? ओके, आप किसका सहारा लेते हैं? टेल मी, व्हाट इज वन थिंग, व्हाट इज वन थिंग. और ये तो छोड़िए, जो आप करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके अलावा मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये कैसे अपने टारगेट को हिट करती हैं, कैसे अपने टारगेट तक पहुंचती हैं एवरी सिंगल टाइम विद प्रिसीजन. डू यू नो हाउ? यस, देयर इज अ सिस्टम and we call it GPS. What is GPS? GPS stands for Global Positioning System. But my question to you is, how does your mind work? आपका दिमाग कैसे काम करता है, और हम कैसे उसको इस जीपीएस की मदद से उसको रन कर सकते हैं. And that's a wonderful concept. So I would request you all to be here for next 20 minutes. अगले 20 मिनट तक, 15-20 मिनट सब कुछ छोड़ दीजिए and be with me and to understand how this GPS works. GPS of our mind works. हमारे दिमाग के जीपीएस को क्या कहते हैं, हमारा जो दिमाग है उसके जीपीएस को क्या कहते हैं, और हम उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं. आज सब हम इसकी बात करेंगे अगला 15-20 मिनट. माय रिक्वेस्ट इज, प्लीज शेयर इट एवरीवेयर. ओके, सब जगह पर इसको शेयर कीजिए, आपके जितने भी फेसबुक में ग्रुप्स हैं, यूट्यूब पर हैं. सो प्लीज शेयर इट एंड बी विद मी एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे इफ यू वांट टू लर्न ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके दोस्तों, हमारे जो दिमाग का जीपीएस है उसका एक खास नाम है, उसको मैंने नाम दिया एमपीएस. What is this? MPS. What does MPS stand for?
व्हाट डज एमपीएस स्टैंड फॉर? एमपीएस स्टैंड फॉर, जल्दी से बताइए, एमपीएस की फुल फॉर्म, अगर जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो एमपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए. आई वांट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, राइट हियर. ओके, व्हाट इज एमपीएस? योर माइंड रन्स थ्रू एमपीएस. वुड यू बिलीव दैट? आप जाने अनजाने में अपने दिमाग को ऐसे ही रन करते हैं. यस, एमपीएस इज माइंड पोजीशनिंग सिस्टम. अगर आप अपने माइंड को पोजीशन करना सीख जाते हैं, अगर आप ये सीख जाते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है, आप उसको कैसे, बहुत बढ़िया, सूरज ने भी कहा है, ऐशरत ने भी कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है माइंड पोजीशनिंग सिस्टम. थैंक यू सो मच. या मेंटल पोजीशनिंग सिस्टम, जैसे जिज्ञासा ने बात की है. This is MPS, and today we are going to talk about the similarities between GPS and MPS. Remember one thing, हम जब सबसे पहली बात करते हैं, देखिए जब मुझे कहीं पर जाना होता है और मैं उसमें लोकेशन ढूंढता हूं, गूगल मैप्स में जाता हूं, सबसे पहले मैं क्या डालता हूं? सबसे पहले मैं क्या डालता हूं? I put my destination. That means I start with the end in mind. I don't start with my current position. Now in life generally what happens is कि most of us actually start talking about our current position. Yes or no? Write down. हम अक्सर क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं स्टेट की, आज की स्टेट की, आज मैं क्या खड़ा हूं, मेरी इंग्लिश खराब है, मुझे ये हो गया है, and all that kind of stuff. But why don't we talk about where do I want to go? तो अगर आप अपने जीपीएस को कमांड पहले ये देते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं, फिर आपसे पूछते हैं आप कहां हैं, वो सेकेंडरी है. तो एवरीथिंग बिगिंस with end in mind. Remember that. Be it GPS or be it MPS. And remember one thing, when you talk about end result, end will show you how. End will show you how. So beginning is, if beginning is what is end? Tell me. If beginning is what are you doing right now? What do you want to do? If beginning is what is end? Tell me. जल्दी से मुझे बताइए, अगर आप इसको बिगिनिंग को व्हाट मानेंगे तो आप एंड को क्या कहेंगे? सो दोस्तों, एंड होता है हमारा हाउ. दैट मींस हाउ यू विल गो देयर विल बी टोल्ड टू यू. ये आपको बताया जाएगा. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट कि हाउ के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. हाउ आपको दिखाया जाएगा. You know, the second similarity between your GPS and your MPS is it knows the destination and the way to it. आप अगर ध्यान दें, जैसे कि आप करते आए हैं कि जब आप कहीं पर बैठते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी में बैठे या ओला में बैठे, तो आप क्या रास्तों में देखते हुए चलते हैं कि ये मुझे कहां ले जा रहा है? अगर आपको ध्यान हो कि जब तक ये नहीं था जीपीएस, तब तक हम रास्ते देखते हुए चलते थे, ये मुझे सही जगह ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है. बट नाउ यू नो इट, यू ट्रस्ट इट, यू डोंट लुक एट द वे, बिकॉज यू ट्रस्ट द सिस्टम. You know it will take me, it knows the destination. आपको मालूम है, it knows the destination and the way to it, and you don't worry about way. By the way, do you? क्या आप रास्ते के बारे में चिंता करते हैं? बिल्कुल चिंता नहीं करते. You don't worry about the way. The way will be shown to you, and this is your mind positioning system. The way is shown to you if you start with end in mind. Yes or no? Absolutely right. वो हाउ दिखाता है. Yes or no? टेल मी. अगर आप जीपीएस के साथ ये करते हैं तो आप अपने एमपीएस के साथ भी ये कीजिए. यू डोंट वरी अबाउट हाउ, यू डोंट वरी अबाउट वे, यू जस्ट वरी अबाउट द एंड रिजल्ट एंड मेक अ पिक्चर ऑफ द सेम. आप उसकी पिक्चर बनाइए और आपको वहां ले जाया जाएगा. कैसे ले जाया जाएगा? हाउ द यूनिवर्स विल conspire to meet you that end destination, your end result is up to the universe. By the way, कई बार ऐसा होता है कि आपको अक्सर हर्डल्स दिखाई देती हैं. ओके, ट्रैफिक जैम्स दिखते हैं आपको, रास्ते में दिखाया जाता है कि देयर आर जैम्स. होता है कि नहीं? देयर आर ट्रैफिक जैम्स, इट इज शोन टू यू, बट देन डू यू बॉदर अबाउट इट? नो, यू डोंट बॉदर. जैम्स दिखते हैं, व्हाई डोंट यू बॉदर? व्हाई डोंट यू बॉदर? टेल मी. अगर आपका सिस्टम जैम दिखा रहा है, ट्रैफिक जैम दिखा रहा है, तो वो उसके साथ साथ क्या दिखाता है? और There are hurdles on the way. और आपका एमपीएस भी ऐसे काम करता है. मेंटल पोजीशनिंग सिस्टम या माइंड पोजीशनिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसे काम करता है. वो आपको हर्डल्स दिखाता है, लेकिन हर्डल्स के साथ साथ क्या दिखाता है? टेल मी. आपको जो आपके रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं वो दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या दिखाता है? व्हाट डज इट टेल? व्हाट डज इट शो? जल्दी से बताइए.
इसके अलावा वो क्या दिखाता है आपको? अगर वो आपको आपकी हर्डल्स दिखा रहा है तो इसके साथ साथ आपको दिखाता है ऑल्टरनेटिव रूट। यस और नो? वो आपको दिखाता है दूसरे रास्ते जिससे वहां पहुंचा जाएगा। डज इट अबोर्ट द जर्नी? क्या वो आपकी जर्नी को वहीं पर अबोर्ट करता है, खत्म करता है? अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम लगा है तो क्या आपका सिस्टम ये बताता है कि नहीं भैया घर वापस जाओ, आगे ट्रैफिक जैम है? कभी किसी सिस्टम ने ये कहा है? नो, सिस्टम डज नॉट टेल दिस। व्हाट सिस्टम सेज इट? It shows you an alternative path. It may be a longer path, but it ultimately takes you to your destination. And that is more important. The way, absolutely right. The way, absolutely right. जो विकास जी ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, it shows you, जैसे मैंने अभी आपको सामने दिखाया भी है, alternative route. ओके, जो विकास जी उन्होंने ये बताया है, यस, ऐशरत ने बताया है, इट शोज यू द वे, इट शोज यू द वे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सम अदर वेज, द वे विल बी शोन टू यू इफ देयर आर हर्डल्स ऑन द वे. It will be shown to you. You don't have to worry about that. You don't have to abort your journey. Yeah, it offers alternative route instead of aborting the journey altogether. Did you get my point until here? अभी तक आपको मेरी बात समझ में आई, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमारा एमपीएस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जितना कि हमारा जीपीएस. डिड यू गेट माय पॉइंट? यस और नो? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सिमिलरिटी बिटवीन द टू. दोनों के बीच में दूसरी सिमिलरिटी क्या है? आहा, वंडरफुल, वंडरफुल. यू कैन गो टू एनी प्लेस यू वांट टू. आप किसी भी जगह जाना चाहें आप वहां जा सकते हैं. And it doesn't matter whether you have gone there before or not. आप वहां पर पहले गए हैं या नहीं गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं. जब आप सबसे ज्यादा मैप का इस्तेमाल कब करते हो? जब आपको रास्ता पता है, when you know the way or you don't know the way? Tell me. And this is a very important point to understand. आप जीपीएस का इस्तेमाल कब ज्यादा करते हो? When you know the way, when you know the how, when you know the way, or when you don't know the how? You don't know the way. Tell me. Yes, give me the answer. When do you use your GPS most? When do you use your GPS most? The way will be shown to you, as I told you. So when do you use? For unknown ways. Absolutely, absolutely. You're spot on, Ishrat. Ishrat ने बिल्कुल सही बात कही कि और जिज्ञासा ने भी यही कहा. When we don't know the way, जब हमें रास्ता नहीं मालूम होता, for unknown ways, और when we don't know the way. ओके, जिज्ञासा ने भी यही आंसर दिया एंड विकास जी ने भी यही आंसर दिया है. एब्सोल्युटली राइट. व्हेन वी डोंट नो द वे. सो यू कैन सी योर कमेंट्स देयर. ओके, प्रदीप हैज गिवन द सेम आंसर. ओके, सो इफ आई शो you answers here, I would like to show your captions. Yes, just a minute. Yeah, I'll show you your chat overlay and you look at this. Okay, if you write it here, so these comments will display here, but the point I want to make it to you is when we don't know the way. Okay, yeah, when we don't know the way, you can see जितने भी लोग हैं, आप जितने भी लोग यहाँ पर अपने कमेंट दिखा रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप इस बात को याद रखें, ये बात आपने ही कही है. When you don't know the way. Now, why don't you do the same? When you don't know the way to your target, why do you panic? Why don't you apply your MPS here? Why don't you say, oh, no problem at all? What I'll do is, I'll switch on my MPS. I'll have the end result in mind and I'll reach there. The way will be shown to me. Why do you panic in the beginning? Yes or no? So when MPS should work, the MPS should work when you don't know the way. GPS works best. And you take services of GPS when you don't know the way, when you don't know the how. The same thing should happen with MPS. It should happen with MPS. यही MPS के साथ होना चाहिए. Okay. Powerful. If it is powerful, write down powerful. Yes. If it is powerful, write down powerful. Now the next similarity, the wonderful similarity that I have between GPS and MPS is that it gives you the shortest possible way to reach your destination. Now you may be having some other way in your mind. I'm not denying that. आपके दिमाग में हो सकता है कोई और रास्ता हो, आप किसी और तरह से वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपका एमपीएस
या आपकी गाड़ी का जीपीएस, दोनों आपको स्मृति, बिकॉज यू हैड नॉट रिटन एनी कमेंट अप टू हियर, आई विल शो यू. सो स्मृति की एक कंप्लेन है जो मैंने ऊपर दिखा दी है, अभी स्मृति को नजर आ रहे हैं. ओके, योर कमेंट्स आर अपीयरिंग हियर नाउ. Okay, it gives you the shortest possible way to reach your destination. Shortest possible way. And you know what? The best part of it? You trust it. You trust it with your eyes closed. Sometimes you are you are in a new vehicle with a new driver to an unknown place and you don't know the way. And the moment you sit in the vehicle, you sleep. You doze off. Why? Because you trust it. You trust the vehicle, the medium, you trust the driver, the universe, you trust the amps. Do you get my point? And this is what you need to do. You need to develop that trust between you and your amps. And when you have end result in mind, you say, okay, come what may, I've got my vehicle. This life is a vehicle. He is the driver and he will take me. I'm in his vehicle. He is driving and I will trust this driver because he has done it to thousands and thousands and lakhs and millions of people all across the world. He has shown the way. We have shown that the way, he'll show me the way as well. What my job is to think about the destination. Where do I want to go? Most of the time, our destination is not clear to us. That's the tragedy. That's the tragedy. Do you understand? Don't be the part of that tragedy. Don't be the part of that tragedy. So that means trust the driver, trust your vehicle, trust the medium. Okay, trust your MPS. If you don't know the way, it will be shown to you. Finish. Yes? Yes or no? Do you get what I'm trying to tell you? That's very, very important. Now, the next similarity and the most important similarity between your GPS and your MPS is both require action. Your GPS requires action. You called Ola, the driver is there, the vehicle is there, you sit in the vehicle, and this he does not put the vehicle in gear. If it is not in gear, will the vehicle move? Will you reach your destination? No. You have to put your vehicle in gear. And if your vehicle is not in gear, that simply means you're not going to move from point A to point B. Now, MPS is important. I'm not denying that. That's the most important thing. But what MPS needs, it needs a push of action. And if there is a push of action, then you will definitely go where you want to go. You choose the destination. Don't choose the way. Way will be shown to you. Choose the destination. Choose your why. Choose your how. Don't choose the way. How will be shown to you. Why you should know. Why you should know. Do you understand? Am I making sense to you? Very good evening, Anvarat. Very good evening to you as well. Am I making sense to you, all of you? That's the most important thing you need to do is you have to choose your destination. You have to choose your why. And I would also request you one thing, that most of the time we abort our journeys or we don't start our journeys because we don't know the way further. We don't know the way ahead. I'll say, take your vehicle out, trust your driver, put yourself into it, switch on your MPS and start. You'll reach there one day. Got it? Got it? Am I making sense to you? Okay, yes, sir. So I've got a lot of yeses. Thank you so much. Thank you. Okay, yes. Now the point is most of the time actually miss this simple technique, but no more now. So what do you gotta do? What do you gotta do now? Whenever you have something like this, number one, you gotta trust your MPS. You gotta switch it on. The next thing, the most important, the last thing that I'm going to talk about today is, it is not until your arrival that you realize the system works. आपको मैं बताता हूँ, जब आप पहली बार
आपने गूगल मैप्स का प्रयोग किया होगा, यूज किया होगा, ओला का यूज किया होगा, या डेस्टिनेशन के लिए कहीं पर भी आपने जीपीएस का इस्तेमाल किया होगा। पहली बार आप उसे बार बार देख रहे होंगे, पहली बार आपको लग रहा होगा ये मुझे पहुंचाएगा कि नहीं, बट एक बार आप वहां पहुंच गए तो आप रियलाइज कर देते हो इट वर्क्स, it works every single time. Good evening everyone, very good evening to all of you. It works every single time. ये काम करता है, ये हर बार काम करता है, and that's what you need to understand. But एक बार वहां पहुंच गए तो अगली बार you will trust the system every single time. So my request to all of you is start trusting your system, build a strong MPS. Now, how to make a strong MPS? Okay, how do you make a strong MPS? Thank you so much Dhanraj and everyone else. Yes, good evening Anup and good evening everyone. I would request you might have missed this session, but this is very very important. So what you do is you watch the session again. Okay, आप इस सेशन को दोबारा देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा, एंड प्लीज शेयर द सेशन एज वेल, इसको सेशन को शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो जिंदगी में आपने नहीं करना है, डोंट फोर्स द सिस्टम, don't play with the system, don't force the system. Okay, the system knows how to work, system knows how to work, let it work, system knows how to work. So you better let it work, don't try to force it. And if you don't force it, it will tell you exactly how it is done. So now my question is, what you are going to do? Okay, my question to all of you is, very good evening everyone. My question to all of you is, what you are going to do now on? अब आप क्या करने वाले हैं, आज के बाद आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने एमपीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, कैसे बिल्ड करोगे, so what are the few things that you are going to do? Tell me. Now that you have known and you believe it, yes, MPS is there and MPS works like GPS. Does it work? Yes or no? Do you have trust in that? So what you are going to do now? अब आप क्या करने वाले हैं? Yes, system knows how to walk. System knows how to show you the way. Absolutely right. No two opinion about that. No two opinion about that. Okay, it knows very well. So what you are going to do? System knows how to work. Absolutely right. Yeah, how to walk means how to walk. Yes. So what are you going to do now? What are you going to do now? Yes. So let me have your comments. मुझे आपके comments चाहिए. तो एशरत का comment आया है. Focus on our destination, which I'm doing these days. Wonderful. So what do you need to do? और क्या करने वाले हैं? ओके, ये एशरत का कमेंट था और मैं आप सबके कमेंट एक एक करके दिखाऊंगा. स्मृति ने कहा है, जस्ट ट्रस्ट द ड्राइवर एंड टर्न ऑन माय एमपीएस. वाओ, दैट्स वंडरफुल. आई ट्रस्ट माय ड्राइवर एंड टर्न ऑन द एमपीएस. दैट्स ग्रेट. यस, एनीवन एल्स? Anyone else? What you are going to do? So I'll ask you to do certain things if you really want to reach your destination and do something that you should be doing. Okay, so what you should do is these 4 or 5 things that you need to do, you gotta do. Okay, the first thing, trust your MPS. As somebody said, trust your MPS, trust your MPS every single time. Yes, विकास जी ने भी यही बोला है. Yes, trust upon the system and go ahead. Absolutely right. Okay, trust your MPS. Then make it stronger. How do you make it stronger? As I told you, वो लोग जो अपने जीपीएस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उसको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. तो जितने लोग एमपीएस को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उसको उतना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे. Then give it more goals. उसका तरीका क्या हो सकता है? Give it more destination, give it more goals, not one goal only. Give it goals after goals. Okay, and the next thing, put yourself in action. Put yourself in action. Okay, if you do this, Girish, thank you so much. If you do this, then definitely it is going to help you a lot. ये आपके बहुत 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 काम करने वाला है. Okay, give it a lot of goals and put yourself in action. Why I say so? Because if you don't put your vehicle in gear, it's not going to move from point A to point B. And if it doesn't move, it doesn't work. Simple as that. You may have your destination in mind. You may have your end result in mind. You may trust your MPS, but there is no action. So it requires that force of action. Yeah, force of action.
So this is what I wanted to tell you. What I would request you is, if you have any question, okay, about your MPS or about your life, you can ask it here. I'll take your questions for next 2 minutes, and then we'll close the session. Okay. And also tell me, yes, action. Thank you so much, Aishra. Thanks a lot. Also tell me, how do you feel about it, and what more do you want to learn? Okay, what more do you want to learn? So you can also write it in the comment section. Okay, on Facebook or on YouTube, you can write in the comment section. I'll take your questions. Okay, and I'll take those topics as well. मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया because most of the time we don't even know that there is something called MPS. Okay, yes, force of action is very, very important. So the one is force of action. You have to put that force, and if you put that force to action, then definitely it will give you a lot of results. Okay, a lot of results. Any question that you have in your mind, you can write it here. Okay, or you can write it in the comment section. I would also request for your suggestions. Okay, so if you give your suggestions, then definitely we'll work on that as well. Okay, yeah, anything that you want to know, please let me know. Okay, so write it in the comment section, and do share it as well. Okay, so thank you so much. It was great talking to all of you. Okay, thanks a lot. और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. It's a short sweet session, but I believe it's going to help you a lot. Okay, it's going to help you a lot, simply because it helped me a lot. Okay, so watch it again, and whatever you have. अनवरत ने कहा हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने उस दिन भी कहा था. You see, the concentration is something that you need to work upon. So the other day also I told many things. The first thing is, uh, generate some kind of interest in what you want to concentrate on. If you resist it, suppose somebody says, thank you so much, thanks a lot. Okay, thank you so much. Suppose somebody says, uh, yes, I'll show yours as well. And thank you everyone, okay, for being here. Pradeep, thanks a lot. Okay, thank you. The point is, if somebody tells you start meditation, but you are resisting meditation. So किसी ने कहा कि आप concentration बढ़ाने के लिए meditation start कीजिए, but you are resisting it. So you won't go even to the point of meditation. Forget about concentration. So the first thing you need to do is you need to generate interest. आपने ये देखा होगा उन सब चीजों में जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी concentration उसमें बहुत अच्छी होती है. Okay, so suppose you have interest in music. Okay, and something comes related to music, your concentration automatically will increase. So the first point is, fall in love with what you want to concentrate upon. That's my advice to all of you. Okay, any other question? I hope I gave you the answer. Anvarat, I think it was by Anvarat. Okay, thanks a lot. Thank you so much. So I believe we should end the session right now, right here, and do share it. Okay, do share the session everywhere, and watch it again if you like it, and do give your comments. Okay, in the comment section as well. So for now, this is all from your host and your English ka dost, Vinit Kapoor, signing off. Let's